मुझे टीसीएस में जॉब करनी है, उसके लिए मैं ये इंटरव्यू दे रही हूँ, नर्वसनेस आएगी। इमेजिन करोगे कि यू आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ टीसीएस, डर खत्म आज हो जाएगा, कंपनी में अपनापन आएगा। योर कंपनी बोले मैं, आर कंपनी बोले। चमक रहा है आपके और मेरे आंसर में डिफरेंस। मेरा एंगल देखने का बहुत अलग होता है। अगर मैं इसको सिर्फ एज इंटरव्यूअर देख रहा होता तो आपका सिलेक्शन हो जाता। हेलो अरीशा, वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? Hello, sir. Good evening. I'm good. How are you? I'm also good. Could you please tell me something about yourself? Yes, sir. Thank you for giving me a significant moment to introduce myself. As you know, my name is Arisha Firdaus and I am a native of Lucknow, Uttar Pradesh. I have done my schooling from Scholars Home, Lucknow, with a percentage of 85 in 10th standard and 88.5 in 12th standard. Talking about my family, we are four members in the family. My father, mother, and a younger brother besides me. My father is in a private job. My mother is a homemaker, and my brother is still pursuing his studies. I have always had keen interest in computer science. Hence, I have invested my last 3.5 almost years in developing my software skills. My technical skills include programming in C and Java. I am also familiar with databases. Using these skills, I have developed a project called Hotel Management System. Coming to my extracurricular activities, I have a keen interest in dancing, playing sports, and reading. I have also been the vice president of my college club. I consider myself as a very focused person and I always work towards my goal. As of now, my immediate goal is to join a leading company like yours and contribute as much as possible towards the growth of the company. Thank you. Okay. Arisha, why you choose C and Java as your programming languages? Sir, firstly, Java was in my school, so I got interested in Java, and then I was introduced with C language in my engineering, so I chose them as my languages, programming languages. Okay. What attracted you to IT industry? Sir, as I told you, I've always had keen interest in computer science, and not other subjects much attracted me as much as computer science. So yes, I took the decision to do BTech in computer science. Could you please tell me any three specialities of your college? Yes, sir. Sir, talking about my college and other college, I feel that my college has more of disciplinary actions against few certain activities, and it is more into discipline and proper dressing and all that thing. Second, I would like to say that in many colleges, I have seen people complaining, hostelers complaining that the hostel is not good or the food is not good or something like that. But I have listened to my friends and all, they have said that yes, the hostel facilities are good and other facilities are good. Plus, I like the fact that the teachers are very much friendly in my college. Out of C and Java, which is your preferred programming language? Sir, I prefer Java over C. What are Java virtual machines and what are the components of JVM? So a Java virtual machine is a virtual machine that allows the Java compiled programs to run over it, as well as those programs that have been compiled to Java bytecode. Sir, talking about what was the other question? What are the components that are present in JVM? Sorry, sir, I don't have idea about it. What is JDK and JRE? So JDK is Java Development Kit and JRE is Java Runtime Environment. So Java Development Kit is a basically kit that consists of various components that is used in Java, whereas Java Runtime Environment is a platform we can say that provides Java programs to run over it. So it can be NetBeans or BlueJ. Okay.
What is the difference between malloc and calloc? So malloc is a keyword that is used in C for memory allocation. It stands for memory allocation. It is used to allocate single block of memory of a specific size, whereas calloc is a keyword that is used to allocate multiple blocks of memory of same size. I'm giving you four keywords. You need to tell me the difference between these. One is global variables, second is static variables, third is local variables, and the fourth one is instance variables. So the global variables are the variables that can be used inside that particular class and outside that particular class also. Whereas static variables are the variables that is defined inside a particular block and it cannot be used out of its block or its function. Then local variables are also the variables that should be used within the class. And last one was so Instance variables, local variables, global variables, and instance static variables. variables. So instance variables are the variables that sir, I don't really remember it right now. Okay. What is an inheritance? Inheritance is a property by which an object or a class acquires the properties of another class through itself. So, a subclass may acquire the properties of its parent class, or we can say a superclass. Okay. What are constructors and destructors? So, constructors are basically um used to initialize an object. It has the same name as its class, and it's syntactically same as a method. A constructor, whether defined as a constructor, is always defined in a class, whether you define it on your own or not. A constructor is by default defined by the Java itself, and if you define a constructor, then it will not be defined by default. Whereas destructors, I have no idea about it. So, Suppose I need to print a line, I need to make a program which generally prints the output. Okay, print a string basically or print a line. Okay, the line is Arisha is rejected for TCS. Okay, now you have to make Java program and you have to explain me how are you going to print this output. Very simple Java program. so first we will define the class, then the main method, and then we will be simply using a string variable to store the string, whatever the string it is, and then we will be using a statement called system.out.println or the system.out.print if we don't want a line after it. Then we will be passing that particular argument into that double quotes of system.out.println. System.out.println in the semicolons in the quotations you will write the Yes, sir. statement. Yes, sir. Okay. Okay. What was the statement? Arisha, you are not selected for TCS. System.out.println. What is the meaning of each of these terms? So system.out.println is a statement that is used to print the argument that is passed into it, and after that adding a new line after it. So println is the statement that is used to print the statement and add a new line after it, whereas system.out is a sir, I forgetting that word. Okay, not an issue. How can we declare a main function in C language? Main function C language. Simply we write int main or the void main and inside it the body of the function, right? How can we declare main in Java? So public static void main. Yes, inside it what arguments do we pass? String arguments, So string what args. what is the string args basically means?
So string args basically means that a string array is created in which the arguments is passed, and that args is basically the name of the main method, the name of the string array. It can be variable names. You can also change to string A, string B, something like that. Okay. What is a multiple inheritance? So, What is the difference between classes and interfaces? so classes is basically a representation of all the set of properties and methods that all kinds of objects of one type contain, whereas interface is an abstract type. It is basically used for abstraction, or we can say it is a blueprint of a class, and it defines the behavior of a class. Okay. What is the use of final keyword in Java? So final keyword in Java is used with classes, variables, and methods. It is used to declare that this variables or this class is not going to change its value with time. It is very useful when the user wants that particular value must always store the same value. That particular variable must always store the same value. Final keyword is used with variables to create constants. Final keyword is used with classes to prevent inheritance, and it is used with methods to prevent method overriding. Okay. Uh, these days, Java is used by most of the IT companies. What do you think could be the reason for the same? And a follow-up question: what do you think is the most important feature of Java? Sir, I believe the most important feature of Java is its platform independency, which means that a software can run on a variety of hardware or software architectures. So I believe Java is most popular because of this feature. Okay. What is exception handling and how exception handling is achieved in Java? So, in computer programming languages, there are two types of errors: compile time errors and runtime errors. So, compile time errors can be easily rectified when you compile the program, but runtime is not easily rectified, and it is rectified after during the runtime of the program. So, to tackle these runtime errors are called the exceptions. And to tackle these kind of exceptions, which can be number divided by zero, or array index out of bounds, file not found exception. So these kind of exception that are handled in Java, that is process is called exceptional handling. Okay. Now, what is the difference between data command language and data manipulation language? Sir, data command language have data command language contains the commands that are used to. So data manipulation language is a language that are used to manipulate the records inside the tables, and data command language. Meaning of manipulating the data. Data command language is the language which commands data, and data manipulation language is the language which manipulates data. No, sir. Basically, updation. The Arisha language is the language which Arisha the data. Like I don't understand what you are telling. What is the like human beings can be manipulated, but how can you manipulate data? Like I don't understand. So, like updation, adding rows and altering it. Great. What is the difference between delete, drop, and truncate command? Sir, delete command is a command of data manipulation language. It basically follows the where clause, like where the particular command has to be condition has to be executed. Whereas truncate command is a command of data definition language, which does not follows the where clause, and it deletes all the records from the table. Okay. What is the difference between top-down approach and bottom-up approach?
Sir, if we talk about Java or C, they follow the top-down approach and bottom-up approach. So C follows the top-down approach, which means it follows the flow of program rather than the data in which it operates. And Java follows the bottom-up approach, which means it first identifies the objects and then follows the flow of the program. Great. Risha, could you please tell me something about your projects, trainings, or internships if you have done any? Sir, I have made a project on hotel management system. It is basically a project in which deals in databases, and it helps the hotel administrator as well as the customer facilities as well as other facilities such as uh, the fees which are they are paying, and whether the room is available or not. So these kinds of operations are being tackled by the administrator of that particular uh, hotel. There are many hotel management apps, present in our country. So, what do you think is the future scope of your model, your project? Sir, we Despite have there is a lot of competition, so how do you think your project has the capability to overbeat? Maybe not today, but in the later end, maybe you might be thinking of implementing some features in it. Sir, we have seen a lot of projects. There are basic projects that are, storing the data of customer and the workers and employees there working there. But we have added another feature, which in which suppose if a customer is not having at that moment is not having cash or money in his bank, so he is like, okay, I will pay when I will leave the hotel. So that feature we have added to, okay, suppose customer has to pay 700, so till now he has paid 400 and that balance would be stored that, okay, before checkout he must, and we must ensure that he should pay 300. So that feature we have added. Okay. What do you think is the accuracy of your project? Like, is it 100% accuracy filled, or there are some bugs in it? Sir, I believe it was running, so it is 100% accurate, but we are still working on it to make it better. Okay. Uh, we means like a team of how many members? Yes, so we are two people in our team. And what was your role in the same? Sir, I was basically coding and the graphics which have images which we have used, how will be the design and all that I have done. Okay. I give you three numbers, A, B, and C. How can you find the second largest number out of these three numbers? So we can store them in an array and then perform a sorting. Storing them in an array will take again extra space. Sorting them will take n log and time complexity. So this is a very expensive program. Can we do it using simple if else? Simple? If else, Yes, sir, we can using. We will compare A and B, then B and C, then we can compare whatever will be the greater one with the output of B and C and A and B. suppose I give you an integer value, okay, any integer number you can imagine. You have to tell me whether the given integer is a palindrome or not. Meaning of palindrome is the same from when read from left to right or right to left. For example, 1, 2, 3, 2, 1. Okay, yes. So the number is 12321. Okay. The number, any number in which the user has input. Okay, sir. So, for example, let's take 123 as a number. So, first we will be using defining a few variables that will be storing the remainders and the sum of whatever we will be getting. First, we will be doing the using the mod operation, and then after the mod operation is done, we will get the remainder as 3. That 3 will be stored in another variable called sum.
and it will be stored in sum multiplied by 10. And again, this loop will be continued till the value of n becomes 0, and we will be keep on removing the last number and multiplying it by 10 and adding it to the sum. Plus we will be comparing if the number or the temporary number which we have taken to do the manipulations and calculations are equal or not. If it will be equal, then we will print it is a palindrome number. If it will not be equal, then we will print it is not a palindrome number. Okay. Why should we prefer you over other candidates? Sir, I consider myself as a very focused person, and I always work towards the goal have created. And I have a leadership quality. I have hosted a lot of events in my college. Plus, as you see, I have also been the vice president, and this means that I have good management skills. Plus I will be very well with the with other team members also. So I believe that I am a good candidate for your company. Okay. Uh, what is the most important feature? I'm just asking about one feature. Okay. What is the most important feature a fresher must have? Sir, talking about other technical skills, a fresher must have the team management skills, or we can say he must be flexible with other team members, because he is not working individually. He is working in a company and along with other team colleagues also. So he will be getting team projects as well as individual projects. But yes, he should be very much flexible with team members as well as with the environment. Okay. Do you have team management skills? Yes, sir. I do have team management skills. Suppose you are leading a team at TCS and due to some reasons few of your team members are sick and the remaining team members are not performing to their full capacity or they are not being able to do that because the most important players of your team are sick. But suppose you have to complete the project within the deadline since you have promised your client, and clients are the most important uh, you know persons for you as a team, right? So uh, in such a situation, how will you keep your team motivated? Sir, first of all, I will allow them okay, you can work from home if you feel like, because at home the thing is different rather than working in the company itself. And other than that, I will keep them motivated with some kind of activities like asking them what about their personal issues, what they're facing in leisure time, whatever we will be having, and talk to them about whatever problems they are facing and motivate them that okay, they will very well get soon, and these are the part of life that is happening to you. So Okay. Suppose you have 12 coins, okay? The coins are numbered as 1, 2, 3, 4 up till 12. All the coins are equal in weight, okay? Equal in weight. They look identical, but one coin is a defective coin whose weight is slightly less, very slight difference, slightly less than the weight of the other coins. But by looking or by measuring with hands, you are not able to identify which coin is light. Okay, all you have is a weighing machine and you don't have any grams to measure the weight. Okay, you don't have a 50 gram or a 100 gram, you don't have grams to measure them. All you can do is put some points on the left bar, put some points on the right bar, and do some permutations and combinations maybe. Okay, so you have to find the defective coin. Okay, the condition is you have to make use of weighing machine the least number of times. Okay, so what could be the least number of times we need to use weighing machine according to you? You can take your time, but I want to answer to this particular puzzle. You can make use of pen and copy also if you want.
Sir, we can divide the coins like six here and six here. Then we will wait. Whatever the weight will come. It's better to understand by numbers. Okay, for example, 1 to 6 coins are in the left, the coin number 7 to 12 are in the right bar. Okay, Then we will check whose weight is less or more. So obviously, in one of the coins, the weight will be less. So okay, that suppose H5 is a defective coin. Okay, we don't know, but the answer is H5 is a defective coin. So 1 to 6 will be weighing lighter, right? Yes, the next. then we will be removing the coins from H7 to H12. That will be removed. Then again we will be dividing those coins, three here and three here, and then we will be checking. So with this method, I believe the number of times we will be using the weighing machine will be less. How many? Uh, 4 times? so 4 times? yes, sir, four times. Okay. Now, this principle is very famously used in one of the sorting algorithms. Could you please name the sorting algorithm which uses the same principle? Dividing the elements into two halves, then again dividing into two halves, then Merge again sort. yes, merge sort. What is the best case time complexity of merge sort? Sir, n log n. Okay. Arisha, suppose there is some delay in joining due to some reasons. So how you are going to utilize this time? Sir, I will be working on my skills, technical skills, as well as I am also want to work on some new technologies that TCS is working currently in, so that I am updated with all the technologies. Plus, I also want to learn more languages other than Java and C, like C++, JavaScript, and Python also. So I'll be working on it. Plus, I'll also be working on my hobbies, that is dancing or reading or something like that. So I believe reading will develop me as a person also. So I will be utilizing my time like that. Okay. Uh, Suppose some other company comes and offers you a bit higher package, the same job role, but a bit higher package and early joining. So what are you going to do? Sir, I am a fresher right now, and currently I'm not looking forward towards the money. I am more into learning and grasping what is in the market. So I believe TCS gives the best of the training and best of the technologies is used. Plus, I will have more growth in TCS rather than any other company. I believe so. Uh, so I will not be choosing that offer What is the before tagline of this. TCS? Sir, its tagline is certainty and experience. Okay, and what any latest rewards or recognitions you know about TCS? Yes, sir. It was in March. It was in March 2022. It was awarded with best investment uh, company. TCS was awarded, and plus it was also awarded for an AI software project, which was developed for the COVID-19 workers that they are working. uh, Coming, and that project was involved, so they got the award for that. Okay. Suppose you are in the HR team of TCS and you have been given a chance to either choose a fresher or an experienced person in our company. Whom would you prefer and why? Sir, if the time is less, if there is some kind of deadline that we have to achieve, then I believe choosing an experienced person would be better, because if we in that case we choose the fresher, then we will have to teach him for the first few months, and then he will be working. So it's better to choose an experienced person in a case of deadline. Other than that, I would say that I would prefer a fresher if there is no kind of deadline or something like that. Okay, just a conditional question to check your IQ.
You have been given two watermelons. You have to choose anyone and you have to eat it. The condition is the faster you eat, the better is your score. Okay. Now the shape of a watermelon is circular as usual as it be, and the shape of the other watermelon is oval, the egg-shaped watermelon. Which one would you choose and why? Sir, can I get 2 minutes time? Yeah, you can take one. Sir, I think I would go with circular watermelon. Not because there is an any IQ or something. I would see it as a very tasty watermelon because I have not eaten it, so I will be very much excited to eat it. I have already eaten a oval watermelon, but not eaten a circular watermelon. So I believe I will be eating that more fastly. Where do you see yourself 10 years from now? Sir, I see myself 10 years from now as a project lead working in a technological company. Plus, one of my personal goal is to also travel 5 to 8 countries and have a new house for myself and the family. Which would be your first target country to travel and why? Sir, I want to travel France. Any reason for that? Sir, Eiffel Tower is one of the reasons I want to travel. Okay. Being an Indian citizen, let's focus on India first. Being an Indian citizen in the IT industry, IT, engineer, what contribution could you do to the country? Like, what problem could you resolve maybe with the help of IT? For example, just a very simple example these days, you see there are cameras in every circle in the road. And the challans are online, so there's no dependency of the traffic police, so there's no corruption involved. Like previously, it used to happen that the 700 rupees challan, your traffic policeman takes only 100 and 200 rupees and just releases the person. But now this is not possible because of the technology. So any problem which you feel being IT industry you can resolve. Okay, any problem you would love to resolve. Obviously, once your goal is clear, obviously you'll find ways how we can use IT to tackle this problem. Any problem which you feel India is facing and you would love to contribute something. So something towards the poor people, like there must be some website or something like that that we can make, and people who are aware of such kind of website can report such a kind of people, and government can come and help such kind of people very easily. So the system must be very easy for the person to contact and put information about it. Through this method, a lot of poverty can be decreased, or the people who are suffering a lot can be developed. Why don't you want to go to masters? Sir, I have done all my education that I wanted to do. I have already done 12 years of education and then 3 years more and then 4 years in engineering. So I am done with my education and I am looking towards practical exposure and learning something practically and creating something that I have learned from. Okay. Risha, in your team, you have two members. One is a practical one, and the other one is a diplomatic one. Okay, he lies a lot. He talks diplomatic, and the other one is very practical guy. Uh, whom would you give another chance to be at your team? So definitely the practical person. Are you a practical person or a diplomatic one? Sir, I am a practical person. I I believe want, yeah, okay. You believe? I believe in action rather than
the diplomacy. Okay. So you are a practical person. You speak truth. I want a honest weakness of yours. Sir, honest weakness. Yeah. Sir, I sometimes struggle with time management. That okay, I have planned something to study, and I keep on studying it, and the next thing which I have planned, I'm unable to skip to it. So for to overcome that weakness, I have also started to make small notepads along on my desk. I put that, and that keeps on reminding me what is the next task that I will have to do. Okay. Don't worry, in our company you have managers to remind you what task you have to do, right? Uh, any bond related, shift related issue you have, or relocation related issues you have? No, sir. I have always been the part of the India, and I would love to explore the South India, even if I am placed there. So there is no relocation issue. Plus, my parents are also very much convinced to send me out of town for work. Okay. Any questions you would love to ask us? Yes, sir. Sir, what will be our learning in the first month when we'll be joining TCS? See, first of all, you will be sent some home modules which will be common for all. Based upon your home modules, uh, this is one criteria, and the second criteria is you'll be given a choice of 10 technologies. Out of that, you'll have to choose three. Okay, so based on the choices you have made and based on the result of your home modules, it will be decided which technology you'll be trained at and given project for the same, right? So you will Okay, have sir. to wait for it. Okay. So this is the end of interview. Your result will be communicated shortly over email. Wish you all the best. Thank you, sir. Okay, Arisha, this is the end of mock interview. Yes, sir. Anyone आप ले सकते हो if you want. And now we are going to discuss feedback one. Okay, apart from that, पहले लाइक मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा प्लेसमेंट होगा का आपका क्या फीडबैक रहा, लाइक पहले कोर्स देखा आपने और उसके बाद एक जो बची खुची कसर थी वो ये मॉक इंटरव्यू था ये भी हो गया, तो लाइक आई वांट फीडबैक कि कैसा रहा कोर्स. Sir, I would say this is the best thing happened to me because कॉलेज में नहीं हो पाता कितना भी टीचर से पूछ लो किताब पढ़ लो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं कोई बता पाता बट एप्टीट्यूड सर होता ही नहीं है मतलब मेरे कॉलेज में तो बिल्कुल भी नहीं कि एप्टीट्यूड जैसी चीज ही नहीं है कि ठीक है आप घर पे एप्टीट्यूड कर लेना एक दो दिन में हो जाता है एप्टीट्यूड क्या ही है बट एप्टीट्यूड सबसे पहली चीज है जो आपको क्लियर करनी है सर मेरा एप्टीट्यूड टीसीएस का आई वुड से द होल क्रेडिट गोज टू यू बिकॉज नहीं हो पाता इफ आई वुड हैव not taken the MPH course, TCS course. It has helped me a lot. सर सब भूल गया था मतलब 12th वाला तो ऐसा लग रहा था सब वैनिश हो चुका है जब मैं पढ़ रही थी चीजें ऐसा लग रहा था ओके अच्छा हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है सारी चीजें सर तो अ बिग थैंक यू टू यू फॉर क्रिएटिंग सच अ कोर्स. थैंक यू सो मच. अभी तो टीसीएस का आपका रिटर्न क्लियर हो गया, राइट? यस सर. ओके. और मेंटरशिप वगैरह थोड़ा बहुत, लाइक मैं तो इतना अवेलेबल रहता नहीं था बट फिर भी टीम वाज देयर टू हेल्प यू आउट और मैं भी जितना बन पड़ता था उतना करता था. सर कोई एक्स्ट्रा जरूरत ही नहीं पड़ती थी उसी में सब क्लियर हो जाता था लाइक क्योंकि चैट्स भी चलती रहती है साइड में तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेती थी तो यू आर ऑलवेज देयर टू आंसर एवरी सिंगल क्वेश्चन तो उसकी नीड ही नहीं पड़ी थी कभी. ये इंटरव्यू के बारे में और बता दो, लाइक ठीक ठाक हम कर रहे हैं या ऐसा कि शराब मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो लोगों का? नहीं सर बिल्कुल ऐसा है ही नहीं. मैं कहती हूँ कितना जिसको कुछ भी नहीं आता मुझे तो मैं तो कहूंगी थोड़ा बहुत मुझे आता है कि हाँ ठीक है पढ़ लेती हूँ मैं. जिसको बिल्कुल भी नहीं आता वो भी अगर इसके करे ना तो एकदम अच्छे से उसका प्लेसमेंट हो जाए. मतलब कोई इसको नीड ही नहीं है कॉलेज जाने की भी नीड नहीं है. मैं तो ये कहती हूँ डीबीएमएस भी यहीं पढ़ा रहे हैं सब चीज यहीं पढ़ा रहे हैं जावा भी पढ़ा रहे हैं एप्टीट्यूड भी करा रहे हैं सब चीज तो कोई नीड ही नहीं है किसी और को कहीं जाने की. ये मतलब हमको हमारा कॉलेज खोलना चाहिए, आप ऐसा बोल रहे हो? सर बिल्कुल 100%.
मॉक इंटरव्यू के बारे में लाइक कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा, जितना एक्सपेक्ट किया था उतना आपको मिला उस टाइप का क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ लाइक, या एक्सपेक्ट किया हुआ कि 10-15 मिनट में से निपटा देंगे? नहीं सर, मुझे तो पता था कि मेरा अच्छे से होने वाला है इंटरव्यू, तो आप ले रहे हैं तो ऑब्वियस की बात है एकदम अच्छे से। और सर मैं नर्वस हो गई थी थोड़ा सा, मतलब मुझे आते थे क्वेश्चंस कुछ कुछ, इनहेरिटेंस मुझे पता था, ये सब पता था, मैं नर्वस होके भूल ही गई कि था क्या उसका आंसर एग्जैक्टली मतलब। मॉक इंटरव्यू का पर्पस ही ये होता है कि भाई जो गलती आप एक्चुअल इंटरव्यू में करने वाले हो वो अभी पहले ही कर लिया, राइट? यस मान लो सर। आप शादी के दिन, मतलब आपके भाई की शादी है, किसी की शादी है, तो आप शादी वाले दिन गार्डन में जा रहे हो, बढ़िया नई ड्रेस पहनते हो, एकदम गड्ढे में गिर जाते हो किसी, तो बेकार हो जाएगा। तो शादी के 1-2 दिन पहले गार्डन घूम कर आ जाओ कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, लाइक तो ऐसा ही मॉक इंटरव्यू है। हाँ, तो आप कुछ बोल रहे थे? यस सर। सर थोड़ा मैंने एब्सर्ड आंसर भी दिए कुछ कुछ, मुझे उसी टाइम रियलाइज हो रहा था जब मैं दे रही थी, बट उस टाइम मैं स्विच नहीं कर सकती थी कि हाँ ठीक है अब मैं दे चुकी हूँ आंसर, अब मुझे यही बोलना है, ऐसा हो गया था। सर कुछ क्वेश्चंस थे आप। अभी पहले हम फीडबैक डिस्कस करेंगे फिर क्वेश्चंस ओके करेंगे। सर। मैं तो आपको फीडबैक दूंगा बट ऑब्वियसली यू नो योरसेल्फ बेटर। आपको क्या लगा, लाइक क्या चीजें अच्छी गई, कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकती थी? सर जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन थे वो मुझे थोड़ा सा उसके लिए रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए सोचने का कि हाँ ठीक है मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। और टेक्निकल और मुझे स्ट्रॉन्ग करना है अपना। बाकी प्रोजेक्ट का थोड़ा सा इशू है, वो मैं सोच रही हूँ और भी कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाऊं किसी लैंग्वेज को पकड़ के। और सर इंटर्नशिप भी नहीं करी है तो। देखो, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कि हमने कितना किया है कितना नहीं किया है, इट्स अ मैटर ऑफ कि हमने जो किया है वो कितने अच्छे से किया। दोनों चीजों में डिफरेंस आप समझो। आपने मेरा रेज्यूमे देखा 100% क्योंकि आपने बहुत बिल्कुल परफेक्ट रेज्यूमे बनाया और वहीं से छाप के बनाया, राइट? तो आपने देखा होगा मैंने सिर्फ सब्जेक्ट में डीबीएमएस मेंशन किया है और 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंशन किए, उसी के बेसिस पे 9 कंपनीज क्रैक कर रही हैं। तो इंटरव्यूअर नेवर वांट्स अ कैंडिडेट जिसको बहुत कुछ आता है। मेरे एक दोस्त ने अपने कंप्यूटर साइंस के सारे सब्जेक्ट लिख रखे थे उसकी स्किल में, उसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई जिसको कंप्लीट कंप्यूटर साइंस आती है वो कल के दिन गेट का पेपर देगा, रैंक क्रैक करेगा और छोड़ देगा कंपनी। और अभी आईआईटी बॉम्बे में, माफ करना, वो एमटेक कर रहा है सच में। ठीक है, तो कंपनीज को ये नहीं चाहिए कि आपके पास कितनी नॉलेज है, और दे वांट इज जितना है उतना प्रॉपर है कि नहीं। इससे क्या सीखते हैं हम कि हम अगर आपको ट्रेनिंग किसी चीज में देंगे तो आप वो भी अच्छे से करोगे। और एट ए टाइम आपको एक ही प्रोजेक्ट मैनेज करना है तो 10 चीजें तो नहीं सीखना है, जो सीखना है वो प्रॉपर सीखना है। ठीक है, तो इंटर्नशिप एंड ऑल की आप टेंशन मत लो। अब यहाँ पर कुछ कुछ बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो आप कुछ भी नोट मत करो, आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप देख लेना विद फीडबैक। ठीक है, सिर्फ मेरी बात सुनो अच्छे से, उसको समझो और अपने इंटरव्यू से रिलेट करो और अपने प्रिपरेशन से रिलेट करो। सबसे पहली बात तो हमको एग्जाम्पल्स के साथ चीजें एक्सप्लेन करनी है, चाहे वो टेक्निकल क्वेश्चन हो या एचआर क्वेश्चन हो। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स यू नीड टू एक्सप्लेन थिंग्स, राइट? इनहेरिटेंस का आप कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते थे, राइट? बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनका हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दे सकते थे। एक बार आप दोबारा इंटरव्यू देखना और फिर आप पॉज कर करके देखना क्या मैं यहाँ कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकती थी क्या? What is the most important quality you feel a fresher must have? You could have explained the quality, which you have explained very well, but at the same time, you could have told कि आपके अंदर वो क्वालिटी कैसी है। You could have shared any incidents of your life. यार झूठ बोल दो, वो थोड़ी ना तुम्हारे पास में जाके चेक कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? डमी सिचुएशन क्रिएट करने में कितना समय लगता है। आई एम टीम लीडर सर, एक बार बास्केटबॉल का कंपटीशन हुआ तो मैं थी, मेरी पूरी टीम थी, तो अगेन हमारी टीम वी वर इनटू, सामने वाली टीम के 7 पॉइंट हो गए थे, हमारा एक ही हुआ था, बट वी डिडंट गिव अप। मैंने स्ट्रेटजीज डिजाइन की, मैंने अपनी टीम को मोटिवेटेड रखा, बोला दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी एंड फाइनली वी वन। क्या फर्क पड़ता है, राइट? तुरंत स्टोरी बन गया ये। ठीक है, उसके अलावा दूसरा, टेक्निकल के जो आंसर्स है ना, दे वर नॉट कॉन्क्रीट। सी, इस चीज को समझो ऋषा, अगर आपसे इनहेरिटेंस पूछा है, अब आपको लग रहा है अगर मैंने नहीं बता दिया, नहीं बता पाई तो मेरी हार है, मैंने बता दी तो मेरी जीत है। गलत नहीं है। अगर आप नहीं बता पाए 100% हार है,
बता देने में भी आपकी जीत नहीं है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एमसीक्यू क्वेश्चन में तो +1 या 0 होता है। ये सेमेस्टर का पेपर चल रहा है, इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल यू एक्सप्लेन थिंग्स। यू डोंट हैव टू बी गुड, यू हैव टू बी बेटर देन द अदर्स। ये बात आपके मन में कॉन्स्टेंटली, दो मंत्र होते हैं इंटरव्यू के, यू हैव टू बी बेटर देन अदर्स, पहला मंत्र। दूसरा, मुझे इस कंपनी में जॉब करनी, दैट्स इट। कंपनी आपसे 10 बार नहीं पूछेगी यू वांट टू ज्वाइन और नॉट, आपको अपने आंसर से एक्सप्लेन करना होगा। मैंने आपसे पूछा आपने सी और जावा क्यों चुना, आपने बता दिया। साथ में आप ये भी बोल सकते थे सर मैंने सीनियर से पूछा टीसीएस में जावा पे काम होता है और मेरा फर्स्ट ईयर से एक चीज मेरे दिमाग में क्लियर थी, मुझे टीसीएस ही जाना है, दैट्स इट। गेटिंग माय पॉइंट? What is the most important quality you feel a fresher must have? Team management skill. मेरे कुछ सीनियर से मेरी बात हुई जो टीसीएस में एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं, एंड अगेन मैं अपने अंदर मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप कर रही हूँ क्योंकि आगे मेरे को आपकी कंपनी में बढ़ना है। चमक रहा है आपके और मेरे आंसर में डिफरेंस? हेलो, तो वी वर डिस्कसिंग, तो मैं ये बोल रहा था कि जो आपके टेक्निकल आंसर्स हैं, है ना, उसमें भी झलकना चाहिए था कि यू वांट टू ज्वाइन टीसीएस बार बार। फॉर एग्जांपल मैंने पूछा कि आप कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रेफर करते हो एंड क्यों, तो आपने बताया मैं जावा प्रेफर करती हूँ। क्यों के रीजन आपने टेक्निकली दे दिया। आप ये भी बोलो कि मैंने अपने सीनियर से पता किया है कि टीसीएस में जावा पे काम होता है एंड मेरा फर्स्ट ईयर से ही एक ही गोल था कि मुझे टीसीएस में जाना है और इसीलिए मैंने जावा सीखी। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं 9 कंपनीज में पता क्यों प्लेस्ड हुआ। आप लोगों को लगता है कि मेरी टेक्निकल स्किल्स ज्यादा है, ऐसा नहीं है। मेरे अंदर दिमाग था, मुझे ये पता था कि बाकी लोग ये आंसर्स नहीं देंगे। उनको बार बार उनको बताना है क्यों टीसीएस में मेरे को जाना है या मैं कितना डेडिकेटेड हूँ उस चीज को लेकर के, राइट। ये तो अल्टीमेट पर्पस है इंटरव्यू का, है ना। आपसे पूछा कि फ्रेशर के अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, आपने कहा टीम मैनेजमेंट। मैम मेरे अंदर ये स्किल्स नहीं थी, लेकिन मैं अपने सीनियर से पूछा कि डाउन द लाइन आपको मैनेजर बनाते हैं तो आपके अंदर वो टीम मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए और मेरा एम है कि मैं मैनेजर बनूं अपनी कंपनी में जल्दी से जल्दी। तो आप अगर ऐसे सोचोगे कि मुझे टीसीएस में जॉब करनी है उसके लिए मैं ये इंटरव्यू दे रही हूँ, नर्वसनेस आएगी, डर रहेगा। एट द सेम टाइम अगर आप ये इमेजिन करोगे कि यू आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ टीसीएस, यू आर ऑलरेडी एम्प्लॉय ऑफ टीसीएस एंड यू आर जस्ट टॉकिंग टू योर मैनेजर, इंटरव्यू नहीं चल रहा, आपकी मैनेजर से डिस्कशन चल रहा है, डर खत्म आज हो जाएगा, कंपनी में अपनापन आएगा। योर कंपनी बोले मत, आर कंपनी बोलो, चलेगा। आपसे प्रिंट एफ वाला स्टेटमेंट पूछा था, इस बार टीसीएस ही कर रही है, कैंडिडेट का नाम बोलते हैं नॉट सिलेक्टेड फॉर टीसीएस, आपको क्या बोलना था सर, पूरा सिंटेक्स एक्सप्लेन कर देते, एल टाइप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अरीशा इज सिलेक्टेड फॉर टीसीएस। दे जस्ट वांट टू चेक योर कॉन्फिडेंस एंड योर विलिंगनेस टू वर्क। बाकी सब में तो ट्रेनिंग मिल जाएगा, एज अ पर्सन आप कितने कॉन्फिडेंट समझ रहे हो। उसके बाद अलावा मैंने आपसे पूछा था आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, यू सेड वर्किंग एज अ मैनेजर और अ लीडर इन अ टेक कंपनी। क्यों भाई इन टीसीएस क्यों नहीं? These small things are noticed। उनको पैसे इस चीज के मिल रहे हैं कि उनको आपकी चीजें नोटिस करनी है, राइट, है ना। उसके अलावा द थिंग विच आई लाइक द मोस्ट इज आपने ऑनेस्ट वीकनेस पूछी। जब अगर अभी कभी भी इंटरव्यू में ऑनेस्ट वीकनेस पूछे, से ब्लंटली जो भी आपकी वीकनेस है वो उसमें एज अ स्ट्रेंथ एज अ वीकनेस पोर्ट्रे नहीं करना होता। तो आपने बोला विच इज वेरी गुड, क्योंकि एवरीवन हैज सम वीकनेस, है ना। जो एचआर है उसके अंदर भी वीकनेस है, उसको भी पता है, तो बताना चाहिए। इनफैक्ट रियलिटी में वीकनेस थी, तो मैंने कहा कि इसको ऐसे पोर्ट्रे कर सकते हैं कि मैं नोट्स बनाती हूँ, वो चीज मैं थोड़ा बोल नहीं पाई कैसे बोलते हैं। तो एचआर के आंसर्स में कोई कमी मुझे नहीं लगी है, सच इम्प्रूवमेंट की स्कोप तो देखो हमेशा होता है, बट आई नो आपने कोर्स देखा हुआ है, वहां से आंसर्स आप बोल रहे थे, विच वाज गुड, कमेंडेबल, अच्छी बात है। बट टेक्निकल में थोड़ा सा यू नीड टू वर्क, राइट। और वो दिखना चाहिए उनके अंदर कि कैसे आया, वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर कंपनी। हर चीज में वो एंगल घुसाओ, सर टीसीएस में ऐसा, सर टीसीएस में वैसा, सर वो खुद जब लास्ट में देखे तो बोले यार 10 लोगों का इंटरव्यू लिया, बाकी 9 का तो ध्यान भी नहीं है, लेकिन हाँ यार एक परीक्षा करके बनती ही आई थी, वही नेक्स्ट लेवल थी। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब एक बार जल्दी से रेज्यूमे का और फीडबैक देख लेते हैं हम, क्या क्या उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। रेज्यूमे में ठीक है, ऑलमोस्ट सब बढ़िया ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
सर या मेरे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं तो मतलब ये जैसे मेजर प्रोजेक्ट है, मतलब अच्छा प्रोजेक्ट है, ये बड़ा है। और भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सी पे है, तो वो ऐड कर दूं? कर दो, क्या जा रहा है, बिल्कुल करो। बस सी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस सर होना वो चाहिए, बहुत भूला है। confidence होना चाहिए। छोटा है तो क्या हुआ, करो हाँ थोड़ा मेंशन। सा सर वो भूला हुआ है। भूला हुआ है तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास समय है इतना उस पर वर्क कर सकते हो तो ठीक है। देखो हम्म। हमेशा दो resume बना के रखा करें। वन इज अ परफेक्ट रेज्यूम, सेकंड इज अ लास्ट मोमेंट रेज्यूम। परफेक्ट रेज्यूम के हिसाब से प्रिपरेशन करो, तो लास्ट मोमेंट रेज्यूम को भी आप फॉलो कर सकते हो अगर आपके पास चीजें एज पर एक्सपेक्टेशन है। लास्ट मोमेंट वाले में सी लिख के रखना वो वाला प्रोजेक्ट, अगर प्रिपरेशन हो जाए तो लास्ट मोमेंट वाला लेके चले जाना इंटरव्यू में, नहीं तो फिर आपका जो परफेक्ट रेज्यूम है वो लेके चले जाना। ठीक है, एनीथिंग जो आपको पूछना है? यस सर, उसका आंसर बता दीजिए वाटरमेलन वाले का। सी दैट वाज जस्ट टू चेक कि आप कितने अलर्ट हो। यू नेवर कंज्यूम सरफेस एरिया, यू ऑलवेज कंज्यूम वॉल्यूम। सो यू आर सपोज टू आस्क मी इस सर्कुलर एंड ओवल में वॉल्यूम किसका ज्यादा है, जस्ट टू चेक योर अवेयरनेस कि आप कितना अवेयर हो। गेटिंग माई पॉइंट, है ना? और सर वो वेइंग वाला जो कॉइन्स आपने बताया था? आंसर थ्री है, दैट इज अ होमवर्क टास्क फॉर यू। रिसर्च करो थ्री कैसे है। ठीक सर है, वैसे नहीं होगा डिवाइड करके? लॉजिक सेम था सी, चलो मैं बता देता हूँ। 1 to 6, 6 to 7 to 12, 1 to 6 लाइट रहेगा। अब हम उसको देखेंगे, एक बार वेइंग कर दिया हमने। अब 1 to 3 एक ग्रुप में, 4 5 6 एक ग्रुप में, क्योंकि 5 डिफेक्टिव है तो 4 5 6 लाइट रहेगा। 1 to 3 रिजेक्ट कर दिया है, दो अटेम्प्ट हो गए। अब हमारे पास तीन कॉइन है, 4 5 और 6। आप कोई भी परम्यूटेशन इन कॉम्बिनेशन लगा लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 और 5 को यहाँ पे रख दिया, फॉर एग्जाम्पल 4 5 6। अब आप कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 को एक तरफ रखा, 4 और 6 को एक, मतलब अभी तीन पॉइंट्स है ना, तीन में से मैं कोई भी दो उठा लू और रख दू। 4 5 और 6 तीन कॉइन्स है, एक और अटेम्प्ट करना, मैं कोई भी दो कॉइन उठा लूंगा। मान लो मैंने 4 और 6 उठा लिए, इक्वल वेट होगा यानी 5 डिफेक्टिव। 5 और 6 उठाया, 5 विल बी लेस यानी 5 डिफेक्टिव। 4 और 6 उठाया, अगेन 5 विल बी लेस यानी 5 डिफेक्टिव। एक सिंगल अटेम्प्ट में आप पता कर सकते हो। एनी टू कॉइन यू पुट ना, अगर मान लो मैंने 4 और 6 भी पुट किया तो इक्वल वेट यानी दोनों करेक्ट, 5 डिफेक्टिव आ गए। थ्री अटेम्प्ट्स विल बी रिक्वायर्ड। हाँ, इसी से मैं एक चीज और बोलूंगा, आपको बाकी बच्चों के भी इंटरव्यूज देखने की जरूरत है। तो अभी जब तक आपका इंटरव्यू नहीं आ रहा है तब तक डेली दो दो तीन तीन इंटरव्यूज निपटाओ बच्चों को। ठीक है, क्या मैंने उनसे क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने क्या आंसर दिए, फिर मैंने क्या फीडबैक कॉल दिए, क्योंकि दूसरों की गलतियों से भी हमको सीखने को मिलता। हो सकता है वो पॉइंट आप इंटरव्यू में आप बोलने वाले हो आपको, क्योंकि बिकॉज इन अ 50 मिनट्स और 1 आवर इंटरव्यू वी कांट कवर एवरीथिंग, राइट? कुछ ना कुछ छूट ही जाने वाला है। फिर भी इफ यू वॉच्ड, अगर आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो आप देखोगे मैंने आपका टेक्निकल भी चेक कर लिया, प्रोजेक्ट भी चेक कर लिए, प्रोजेक्ट पर भी डिटेल में डिस्कशन हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको सिचुएशंस में भी डाल के देख लिया, आपके मैनेजरियल स्किल्स, एचआर, अबाउट द कंपनी सब कवर कर दिए, राइट? तो ठीक है, बढ़िया हो जाएगा सिलेक्शन, तो अभी भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। सर लेकिन अब मतलब आप जब देख रहे थे तो मैं नर्वस थी या फिर क्या नहीं था? देखो, अ, मैं, मेरा एंगल देखने का बहुत अलग होता है, मैं परफेक्शन के एंगल से देखता हूँ। अगर मैं इसको सिर्फ एज इंटरव्यूअर देख रहा होता तो आपका सिलेक्शन हो जाता। बट अगर मैं परफेक्शन से के एंगल से देखूं तो आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क एंड रिलैक्स, राइट? So for that sense you need to work hard, and my job is to provide you direction. The correct direction is HR part is good, personality wise, communication wise things are good. What needs to be improved, resume is also good. What needs to be improved is your technical, right? ठीक और है, सर जो पहनूंगी यही है, एक लाइट ब्लू है शर्ट, तो anything will work, light color clothes will work, it's good enough, राइट? एंड अगेन वो वाले ईयरफोन्स ट्राई करना अवॉइड करो, एंड हैव अ बैकअप ईयरफोन एज वेल। अभी देखो क्या हो रहा है ना, बिना ईयरफोन के थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है आपके फैन का, और कुछ कुछ नॉइज आ रहा है।
आप छोटा सा पेन भी रख रहे हो तो बहुत तेज नॉइज आ रहा है, राइट? तो वो ईयरफोन्स चलो मेरे सिस्टम में नहीं चल रहे, मे बी वहां माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में चल जाए, बट एटलीस्ट हैव अ बैकअप, एटलीस्ट हैव वन मोर सेट ऑफ ईयरफोन्स। एक तो ब्लूटूथ वाला हो गया, एक वायर वाला रख सकते हो। सर एक चीज और थी, सर मैं स्पेक्स लगाती हूँ मतलब यूजुअली, तो आप मुझे बता दीजिए ऐसे ज्यादा मतलब कंफर्टेबल दोनों में हूँ या स्पेक्स में ज्यादा कम मतलब सही है? सी इट्स ऑल अबाउट हाउ कंफर्टेबल यू आर। हमको एज ए इंटरव्यूअर कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, बट आप कितने कंफर्टेबल हो। देखो अभी आप मेरे को जानते थे एंड समवेयर इन योर माइंड आपको ये पता था कि इस इंटरव्यू से रिजल्ट नहीं मिलने वाला मेरे को, है ना? बट जब एक्चुअल इंटरव्यू होता है द नर्वसनेस विल बी 20 to 30 टाइम्स मोर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, राइट? है ना? और अगेन थोड़ा सा हैंड एक्सप्रेशन का यूज हम कर सकते हैं। मेरा 13th इंटरव्यू है फॉर द डे, आपका फर्स्ट है, कम किसके अंदर? करना है या करना है? क्या? सर हैंड एक्सप्रेशंस कम यूज करने या आप ना क्या बोल? अच्छा कर रहे थे, बट यू कैन इवन यूज मोर हैंड एक्सप्रेशन, और कर सकते हो। या सी इट्स ऑल अबाउट जनरेटिंग पॉजिटिव पॉइंट्स यार, कितना आप पॉजिटिव पॉइंट्स, एक गेम खेलते हैं ना, इसलिए होता है कितने दुश्मनों को मार सकूं, कितना पॉइंट्स में जनरेट कर सकूं, वही होता है। तो यहाँ पर भी यही है, आप कितने पॉजिटिव पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो, ठीक है? तो मे बी आपकी टेक्निकल स्किल्स पसंद ना आए, बट आपके हैंड मूवमेंट्स पसंद आ जाए कि भाई बंदी का प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, क्लाइंट डीलिंग में फाड़ देगी बंदी, इसलिए ले ले, है ना? हम तो बहुत एक लिमिटेड एस्पेक्ट से जानते हैं भाई, एचआर कंपनी में काम कर रहे होते हैं, उनको पता है नंबर ऑफ ओपनिंग्स होती है, नंबर ऑफ नेचर ऑफ जॉब्स होती हैं, राइट? उनको आइडिया होता है कि यार कैसे चीजों को डील करना है ना, कहाँ पर किस प्रोफाइल में आप रख सकते हो, है ना? ठीक यस। है, एनीथिंग एल्स? सर एक दो दो क्वेश्चन और है सर। एक इंटर्नशिप मैंने कोई करी नहीं है, तो अगर वो ऐसा पूछ लेंगे कि नहीं पड़ता उससे, नहीं पूछ, वैसे तो पूछेंगे नहीं, अगर पूछते भी हैं तो सिंपली यू कैन से सर नॉलेज वाइज आई फील आई एम गुड इनफ, और बस ऐसा कुछ नहीं। मैंने नहीं मैंने की थी इंटर्नशिप्स, बट मैंने मेंशन नहीं की थी, क्योंकि इंटर्नशिप में कई बार मेरे को लगता है यार अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला भी काम होता है वो यार, कि अगर आप मान लो अच्छे नहीं हो उस चीज में, तो मान लो आपने जावा में इंटर्नशिप की, तो मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछता ना आपसे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्या दूसरा सवाल, सॉरी आपका क्या था? सर जैसे मुझे कोई न्यू टेक्नोलॉजीज, मशीन लर्निंग है, ये सब है, तो मैं सोचती कि किसी को एक लर्न कर लूं, लाइक अभी जो भी मेरे पास टाइम रहेगा उसमें। तो सर आपका रिकमेंडेशन क्या होगा, मतलब क्या लर्न करना चाहिए इस टाइम? इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने घंटे का एफर्ट दे सकते हो। मेरे हिसाब से तो एक महीना आने वाला ना, ये डिसाइड करेगा आपके आने वाले 10 साल कैसे होने वाले, ठीक है? तो भाई दिन में 14-15 घंटे मेहनत करो, बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग सीख लो, आराम से सीख सकते हो। एटलीस्ट उनको ये पता होगा कि एटलीस्ट बंदी ने शुरू कर दिया तो खत्म भी करेगी, ठीक है? ओके, चलो लेट्स वाइंड दिस अप। आपको रिकॉर्डिंग विद इन 24 आवर्स मिल जाएगी। मैं यहाँ से स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, 99% अपलोड हो गई, 100% होते हैं आप लीव कर सकते हो, ठीक है? विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सो गाइज दिस वाज द एंड ऑफ मॉक इंटरव्यू। मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। यदि आप भी अपना मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रही है, मॉक इंटरव्यू बाय यशजन सर। जाकर के अपना मॉक इंटरव्यू जरूर से शेड्यूल कराएं, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया और क्या क्या आपके अंदर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।